अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा, जहांजेब और आलमगीर और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सबको मर्ज़ प्यार सलाम। और Top गाइस, टॉप 5 ग्रेटेस्ट किंग्स इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के जो 5 बेहतरीन कामयाब तरीन ग्रेटेस्ट जो किंग बादशाह जो गुजरे कौन हैं है? वो कौन कौन से हैं, उस पर वीडियो है। ये वीडियो है जी। वीडियो तो सही वीडियो होती किसकी है हमें नहीं पता। हाँ, पर आप लेकिन ये वीडियो है जी कमेंट में बताना। सिंपली चुम्मा चुम्मा वालों की वीडियो है। सिंपली चुम्मा। तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है। बहुत चुम्मी वाली वीडियो बनाते हैं, तो चलते हैं इनकी बनाती हैं अच्छा बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं ये। तो चलते हैं इनकी पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Simply Chumma. India is probably one of the richest countries in the world in terms of its history and heritage, in terms of rulers and ruling clans. Thousands of years have passed and the country has seen several dynasties, rulers, emperors and conquerors. Let us take a look at some of the greatest kings that ruled this land. This ranking is based on the number of years ruled, the total region ruled and the impact on India the rule had. Before we get on with the list, do not forget to subscribe to Simply Chumma and do press the bell icon for immediate notification of our new videos. Number 5. Shivaji. Shivaji Bhosle was the founder and the greatest king of the Maratha Empire. Hailing from the Bhosle Maratha clan, he created an independent Maratha kingdom with Raigad as its capital. He was crowned as Chhatrapati for leading the struggle against the Adil Shahi Sultanate of Bijapur and the Mughal Empire. He is remembered as a great warrior and a hero who united most of India against the Mughals. Shivaji is also known for pioneering the guerrilla warfare methods using geography, speed and surprise for attacks against more powerful and larger enemies. Number 4. Prithviraj Chauhan. Prithviraj is considered to be the greatest warrior of India and also one of the greatest in the world. He was known as the Warrior King. Chauhan was the last independent Hindu king before Hemu to sit upon the throne of Delhi. He succeeded the throne in 1169 AD at the age of 20 and ruled the twin capitals of Ajmer and Delhi. He defeated the mighty Bhimdev, ruler of Gujarat, at the mere age of 13. He was trained in archery and could aim at a target while being blindfolded. His love story with his enemy, Jayachand's daughter Samyukta or Sanyogita, is very famous. He rode off with her on the day of her Swayamvar. Number 3. Rajaraja Chola. He was popularly known as Rajaraja the Great. Rajaraja translates to the King of Kings. He is one of the greatest emperors of India. He went down in history as the harbinger of the heights of the Chola glory. It was during his reign that the Chola dynasty started to emerge as a great empire. By conquering several kingdoms in India, he expanded the Chola empire as far as Sri Lanka in the south and Kalinga, Odisha in the northeast. Rajaraja Chola was one of the greatest sovereigns of South India, a valiant conqueror and empire builder, an able administrator, a patron of arts and letters. He was a great patron of Tamil literature as during his reign, the texts of the famous Tamil poets Appar, Sambandar and Sundarar were collected and edited into one compilation called Tirumurai. அடிகளே, இந்த அரிய பொக்கிஷத்தை ஆண்டவன் என் கையிலே ஒப்படைத்தாலும் இவைகளை திருமுறைகளாக வரிசைப்படுத்தும் பொறுப்பினை தங்கள் கையில் ஒப்படைக்கிறேன். நன்றி நன்றி. திருமுறை கண்ட சோழமன்னா, தெய்வ திருவருள் பெற்று நீவீர் வாழ்க வல்லாண்டு. ஏடு தந்த தில்லைவாழ் நாயகன் திருவடியிலே முதலில் சமர்ப்பிக்கலாம். He initiated a massive project of land survey and assessment in 1000 AD, which strengthened the imperial administration and led to the reorganization of the empire into units known as Valanadis. He built the famous Brihadishwarar temple, which is one of the largest and tallest temples in India. Number 2. Chandragupta Maurya. He was the founder of the Maurya Empire and the first emperor to unify most of Greater India into one state. He ruled from 322 BC until his voluntary retirement and abdication in favor of his son Bindusara in 298 BC. Chandragupta Maurya was a pivotal figure in the history of India.
Prior to his consolidation of power, most of the Indian subcontinent was divided into small states, while the Nanda Empire dominated the Indus-Gangetic plain. Chandragupta succeeded in conquering and subjugating almost all of the Indian subcontinent by the end of his reign, except the Tamil regions, the Chera, Chola and Pandya, and the modern-day state Odisha or Kalinga. His empire extended from Bengal in the east to Afghanistan and Balochistan in the west, to the Himalayas and Kashmir in the north, and to the Deccan Plateau in the south. It is the largest empire yet seen in Indian history. Number 1. Ashoka. He was commonly known as Ashoka or Ashoka the Great. One of India's greatest emperors, Ashoka reigned over a realm that stretched from the Hindu Kush mountains in the west to Bengal in the east and covered the entire Indian subcontinent except parts of present-day Tamil Nadu and Kerala. The empire's capital was Patliputra in Magadha, present-day Bihar, with provincial capitals at Taxila and Ujjain. In about 260 BC, Ashoka waged a bitterly destructive war against the state of Kalinga. He conquered Kalinga, which none of his ancestors had done. He embraced Buddhism after witnessing the mass deaths of the Kalinga War, which he himself had waged out of a desire for conquest. Ashoka reflected on the war in Kalinga, which reportedly had resulted in more than 100,000 deaths and 150,000 deportations. Ashoka converted gradually to Buddhism, beginning about 263 BC. What do you think of this list? Do press the like button if you enjoyed this video and share it with your friends and family. If you want to see a second part of this series, do reply in the comment section below. बाकी हिंदुस्तान के बड़े नंबर किंग थे, किंग्स थे ये सारे। अच्छा, चंद्रगुप्त अशोका का मौर्य ड्रामा का हमने भी देखा मैंने है, ऐसा अशोका तो देखा हुआ है, सम्राट। और अशोका वाला तो मैंने ड्रामा देखा भी हुआ है काफी कलर्स अर्सा। कलर्स पे जब आना शुरू हुआ था तो काफी अर्सा देखता था उसका, बल्कि साउंड भी अशोका है, अशोका इस टाइप का नाम, इस तरह का जो है ना साउंड होता था। मेरा गला खराब है नहीं तो सही वाली शुरुआत से था, तो इसलिए जो है ना उनका पता भी है। और शिवाजी महाराज का हो गया, उनका भी पता है। और जो दूसरे आए थे चौथे नंबर पे, कौन से आए थे बोला? कौन? महाराणा प्रताप, हाँ, महाराणा प्रताप, चोला राजा। ठीक है जी। तो जो Ruled तीसरे the नंबर वाले twin थे ना, capitals of तीसरे नंबर वाले, उनके बारे में मुझे याद कितना पता नहीं था। मौर्य एम्पायर, मौर्य, हाँ ये वाला है। मौर्य थे। चौथा राजा है ना, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज ये तो पृथ्वीराज चौहान है, इनका तो पता है। पृथ्वीराज चौहान और मौर्य एम्पायर, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट। अशोक को इनका बड़ा नंबर नाम भी दिया उन्होंने, अशोक को नंबर 1 दिया। अशोक सम्राट। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि अशोक सम्राट नंबर 1 है, और बाज़ जगह पे ऐसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान का भी बड़ा नाम होता था। और क्या नाम है, वो जो शिवाजी महाराज को भी कहते हैं कहीं पे, शिवाजी भोसले पर और चीजें भी देखते हैं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का नंबर 1 नहीं दिया उन्होंने। नहीं यार, और चीजें भी देखनी होती है ना, किसकी बड़ी सल्तनत कितनी बड़ी होगी, हाँ वैसे उन्होंने हिसाब से बताया। हाँ, हिसाब अब से देखा नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य की बताई उन्होंने, अफगानिस्तान के इलाके भी, पूरा हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, इस तरह के इलाके सारे बीच में थे। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, इधर ये तो उनके पुत्र हैं मेरे ख्याल से, छत्रपति शिवाजी महाराज के। शिवाजी महाराज भैया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम गलत बात कह रहे हैं, फिर आप कहोगे। कमेंट में कहना जी भाई ओ भाई। नहीं, मुझे वाकई ऐसे लग रहा है क्योंकि 1674 से 1680 की बात है ये। अशोक सम्राट वो महाराणा छत्रपति शिवाजी महाराज से पहले आए होंगे 1500-1600 में। सो गाइस, इसने कितने साल किए? 1674 से लेके 1680, 6 साल। 6 साल। और लेकिन 6 साल बड़े अहम थे। हम्म। उनका जो स्टाइल था वो बड़ी कमाल का था ना, इसलिए। किनका? शिवाजी महाराज का। शिवाजी भोसले। 6 साल तक उन्होंने बस। सो गाइस, वीडियो पर जबरदस्त थी। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले हम आपसे हमारे चैनल को गुल्ला को लाइक करें, कमेंट करें, 90% पाकिस्तान रिएक्ट।